So hi friends, welcome to London Dreams. So today's video is about the first step which we take while applying for abroad study. So उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाला हूँ और काफ़ी लोग को भी डाउट रहता है. इनफैक्ट जब मैं अप्लाई कर रहा था तब मुझे भी था कि what's the first step to get into the university which I deserve and which I kind of be happy while applying to it and while going to that university. So उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. So let's start. सो फर्स्ट स्टेप एज आई मैंशनड आपका यूनिवर्सिटी रिसर्च होता है. अभी ट्री पहले देख लीजिए, काइंड ऑफ स्प्रिंग आ गया है. सो आपको जो भी बैक में ट्रीज़ दिख रहे हैं, लीव्स नहीं रहती बट ऑटम में काफ़ी ब्यूटीफुल लीव्स आ जाती हैं. सो इट्स ब्यूटीफुल. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक मोर प्रिसाइसली, मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि डज रैंकिंग मैटर्स फॉर स्टडी इन यूके. क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही हमारा रहता है कि व्हाट्स द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. हम लोग वही रैंकिंग के हिसाब से एडमिशन लेते हैं विच इज़ काइंड ऑफ राइट, लेकिन वही एक मोटिव नहीं होना चाहिए. इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ. सो मेरा भी स्टेप यही था जब मैं एडमिशन के लिए आया था, एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था. सो मैंने ऑफ कोर्स क्यूएस रैंकिंग, द रैंकिंग, जितनी फेमस वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू मैंने यूनिवर्सिटीज़ को काइंड ऑफ एक लिस्ट बनाई जिसमें मैं एडमिशन क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हूँ और फिर मैंने उस बेसिस पे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहता हूँ कि यू शुड नॉट बी जस्ट मोटिवेटेड अबाउट द रैंकिंग or the world ranking of the university which you are applying. There are different factors which you have to think about it while you are applying, not just ranking. So आपको वो बेनिफिट यहाँ के पता चलेगा. ऑफ कोर्स यू कैन लाइक मेक शाइन इट वाइल स्पीकिंग कि मैं वन ऑफ द टॉप 50 टॉप 100 रैंकिंग्स में आया हूँ यूनिवर्सिटी में. लेकिन जब आप यहाँ आएंगे शायद आपको पता चले आपके कोर्स में वो रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं थी उस यूनिवर्सिटी की, एंड द स्टडीज़ आर नॉट क्वाइट वेल एज पर योर कोर्स. जो वर्ल्ड रैंकिंग है, क्योंकि वो किसी एक क्राइटेरिया के हिसाब से रैंकिंग नहीं देते. द रैंकिंग सिस्टम्स वर्क डिफरेंटली. आपका कोर्स, उनका फैकल्टी, डिफरेंट कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में हंड्रेड्स ऑफ कोर्स होते हैं. स्पोर्ट्स फैकल्टी, टीचर्स, टीचिंग मटेरियल्स, टीचिंग मेथड्स और भी डिफरेंट वेज हैं जिसमें वर्ल्ड रैंकिंग काइंड ऑफ उसको एज अ पॉइंट लेती है वाइल गिविंग रैंकिंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. सो मे बी जो आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी ग्लैमराइज की गई हो, काफ़ी अच्छी भी हो वर्ल्ड रैंकिंग, बट द कोर्स you are applying, they are not good at it as per the teaching materials and different opportunities they are providing. So मेन कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो का यही है कि प्लीज़ डोंट कंसिडर जस्ट द रैंकिंग्स ऑफ द यूके यूनिवर्सिटीज़. लाइक इन इंडिया, बैक इन आवर होम कंट्री, रैंकिंग्स को प्रेफरेंस दी जाती है जॉब्स में हर जगह कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ें. आईआईटी, डिफरेंट बॉम्बे, खड़गपुर, सो मतलब डिफरेंट. सेम गोज़ विद बिजनेस, कौन से बिजनेस स्कूल से आप पढ़े हैं. इट मैटर्स वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन इंडिया, बट it is not similar situation in UK. They do not consider the rankings. Of course they consider the assignments you have done, the projects you have done. They'll ask you about that during the interview, during the job application, but they will never ask you what's the rank of your university. So ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा when you are applying for UK universities. The things I have mentioned, but the things I'm going to mention what you should see in the university while you are applying to that. कि आप उस यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रैंडमली अप्लाई एंड जस्ट गो एंड से दैट इट्स अ यूके यूनिवर्सिटी एंड इट्स बेस्ट फॉर मी, क्योंकि सब के लिए डिफरेंटली सब यूनिवर्सिटीज़ डिपेंड करती है, सब डिफरेंट कोर्सेज के लिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. सो यू हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स. सो मैं आप लोग को एक एग्जांपल भी देता हूँ. मेरे नॉलेज में कुछ लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर्स किए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर अप्लाइंग फॉर सेम पोजीशंस द पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, लाइक एवरेज रैंक्ड यूनिवर्सिटी. सो ये पॉइंट जस्ट मैं ये कोई किसी
टॉप यूनिवर्सिटी को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यूके सिस्टम, यहाँ का जो कंपनीज का रिक्रूटिंग सिस्टम है वो अलग वर्क करता है. इट्स नॉट अबाउट द rankings of the university from where you graduated, but it's all about, like, mostly it's all about the work experience. And presently, like, in the interview, during your application, what you are presenting to them, आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड इवन देर सम रेशियो ऑफ रेफरेंस. अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जो आपको जानता है, सो ही कैन रेफर यू. लाइक इन अमेरिका इट्स मोस्ट कॉमन. लाइक रेफरेंस सिस्टम वहाँ ज़्यादा चलता है और काफ़ी प्रमोटेबल है. लाइक इफ़ यू हैव सम good people known in the company you are applying, they will immediately try to come into your contact the company and try to recruit you if you have like a good stability for application for your position like you are applying. So वहाँ पे ये ज़्यादा चलता है. यहाँ पे भी सेम सिमिलर सिचुएशन है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक ह्यूज थिंग. इट विल अफेक्ट योर एप्लीकेशन बट नॉट एज सच. सो अभी तक मैंने जो इस वीडियो में डिस्कस किया कि आपको क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग, बट what should you consider while you are choosing your first step, like while you are stepping your first stone. So मैं वो पूरा लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि which university you are applying. You should see these things when you are applying, and if like everything is like ticked, you can go forward with the university even if it is not ranked well or it is ranked a bit lower. So first thing is course ranking. पर्टिकुलरली मैं रैंकिंग को डिग्रेड नहीं कर रहा था कि आपको रैंकिंग नहीं देखनी चाहिए, बट इट्स अबाउट मोर प्रिसाइज. यू शुड सी द कोर्स रैंकिंग. अगर आप रैंकिंग देख रहे हैं तो सो यू शुड सी योर कोर्स सब्जेक्ट रैंकिंग्स, कि आप जो कोर्स, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन मार्केटिंग, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, जो भी आप कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यू शुड सी द रैंकिंग्स ऑफ द कोर्स इन द वर्ल्ड एंड इवन इन द यूके, कि उस कोर्स की रैंकिंग क्या है for the university you are applying. Second thing would be the course modules. If you are searching for the course, you will see the modules कि क्या पढ़ाने वाले हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, एंड इट गोज ऑन थर्ड ईयर if you are applying for bachelor's, and if you are going just for masters, you can see for whole modules of the first year. So वो मॉड्यूल्स जब आप उसके उनके डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे कि वो एंड ऑफ द डे वो मॉड्यूल्स क्या दे रहे हैं, आप उसको काइंड ऑफ वो मॉड्यूल्स को, उनके असेसमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपके हाथ में क्या आ रहा है, लाइक व्हाट्स द रिजल्ट. सो इज इट जॉब ओरिएंटेड और इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग अ डिग्री. सो मोस्टली आपको उसमें पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल मेरा एक मॉड्यूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. लाइक द मॉड्यूल इटसेल्फ is job oriented, so the things is been taught in the project management module is quite job oriented, which I can say while I'm applying to some certain companies after my graduation कि मैंने ये learn किया, and I can apply that while I'm like on the role for the company or for the job. There are course certification, like the module as I mentioned, कि आप जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उस डिस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन लाइक गेन की है फॉर द मॉड्यूल यू हैव चूजन. लाइक बिजनेस मैनेजमेंट में चैटर्ड इन मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग एक मॉड्यूल है उसमें एक सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन वो पाई है, अवार्ड ऑफ द ईयर. देयर आर मेनी सर्टिफिकेशन विच दे गोना मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच मॉड्यूल. दे गोना लाइक heavily promote this. So अगर सर्टिफिकेशन ज़्यादा है और सर्टिफिकेशन अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं, so you can go forward with that. And the other thing I would say, the professor. आप जब अप्लाई करें, ये काफ़ी प्रिसाइज हो जाएगा, लेकिन मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी जस्ट बीइंग अफ्रेड फॉर द इंटरव्यू. इज़ लाइक मैंने प्रोफेसर्स को सर्च किया था और उनके काइंड ऑफ आर्टिकल्स पढ़े थे कि मैं इंटरव्यू में अच्छा कर पाऊँ, लेकिन एट द एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
it is a very important thing while while you are doing your application for the university कि आप प्रोफेसर का भी रिसर्च करिए, प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करिए एंड उनके आर्टिकल्स पढ़िए, उनके अचीवमेंट्स पढ़िए, सो दैट यू कैन एडमायर देम एंड यू कैन सी दैट यस ये मॉड्यूल अगर मैं इनसे पढ़ूंगा सो यू कैन लाइक बी अ गुड student after graduation, and you can like use those things in your future prospectus. So of course you can see the teaching methods and the assessment methods कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो पूरा डिटेल में यूके की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मेंशन रहता है उसमें कि किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको, डिवाइडेड फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ाया जाएगा, सेकेंड में कैसे पढ़ाया जाएगा. इवन आई थिंक सो द टीचर्स एंड द प्रोफेसर्स आर ऑल्सो मैंशन कि ये टीचर रहेंगे, ये प्रोफेसर रहेंगे. एंड देयर गोज ऑन विद द असेसमेंट मेथड कि आपका असेसमेंट मेथड कैसे रहेगा. इज इट मोर प्रैक्टिकल, इज इट मोर थ्योरेटिकल, इज इट मोर असेसमेंट बेस्ड, इज इट मोर like a written exam. For example, business management में it's like more research based and assessment based. It's not like you need to go to the university and write a certain exams. Of course there are some in first year like stats and accounting, but most of the modules का जो काइंड ऑफ अचीवमेंट होता है, अगर मतलब मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट द असेसमेंट. दे विल गिव यू असाइनमेंट्स, यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट, एंड at the end you'll submit those and you'll get marks on those assignments. Other thing is the course satisfaction rate, which is a important thing while you are applying. आप जब कोर्स उनके वेबसाइट के थ्रू जाएंगे, यू विल फाइंड कोर्स सेटिस्फैक्शन रेट. दैट्स मीन्स लाइक जो एल्यूमिनाई हैं, जो ग्रेजुएट हो गए हैं, were they satisfied with the course? Even like if you have completed your first semester, university in fact तुरंत मेल करती है कि you have to give the review of the semester and of the professor you have studied. Were they good, were the services good, overall everything. So वो सारा compile होके पूरे थ्रू आउट द ईयर्स का वो फाइनली वो स्टैट्स वेबसाइट पे दिखाते हैं. सो इफ़ इट्स गुड यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस. एंड देयर गोज ऑन विद द एम्प्लॉयबिलिटी रेट कि अगर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं, उनका किस परसेंटेज से वो एम्प्लॉय हुए हैं, या इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी बताती है कि किस परसेंटेज से वो मास्टर्स परसू कर रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी में, या मे बी अलग यूनिवर्सिटी में बट विद द सेम कोर्स. इससे ये पता चलता है दे आर सेटिस्फाइड विद द कोर्स. So you can see that the satisfaction rate of the students who have like graduated and the employability rate the students who have graduated. Of course it's the basic कि आप location देखिए यूनिवर्सिटी का, is it good, is it in good area, is it like more student oriented, or is it like campus life, or is it like in central London the basic disadvantage of the universities are आप कैंपस लाइफ नहीं देख पाते हैं क्योंकि कैंपस ऑफ कोर्स बड़े होते हैं एंड यू कैन नॉट, देयर इज नो, if the university is situated in central London, it cannot be possible for them to provide a campus life service. So if you are going outer London you can see that, but there are more things, not just campus life. If you are even in central London there are more things which you can consider. लोकेशन बेनिफिट, जॉब ओरिएंटेशन, मार्केट कैसा है वहाँ का, स्टूडेंट लाइफ कैसी है वहाँ वहाँ की. सो यू कैन सी दीज थिंग्स. सो हर यूनिवर्सिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट सर्विसेज फॉर एवरी स्टूडेंट. सो वो सर्विसेज क्या क्या हैं और वो कैसे आपको हेल्प करेंगे फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो काइंड ऑफ मेरी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, और मे बी if I'm applying for some new universities I would see these services like career help, interview help. Like these are the basic services which are provided by the universities. So of course the other services are the internship opportunities. अगर वो यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की जो इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करती हैं. सो यू शुड सी दैट इंटर्नशिप्स आर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बैचलर स्टूडेंट एंड इवन फॉर मास्टर्स. सो वो देखना चाहिए. प्लेसमेंट abroad exchange program.
So some universities provide a abroad exchange program like for a semester or for a year. So कुछ student prefer करते हैं कि वो maybe यूरोप जाए, अमेरिका जाए for a year. And the other thing I would say, placement opportunities. If you are applying for bachelors, it would be very rare that some universities provide placement opportunities. If they are not providing, don't judge by that. But if you are just placement oriented, that you need a placement, you should then find just those universities which are providing placement years, क्योंकि यूके में प्लेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं है जैसे बैक इन इंडिया हमारे होम कंट्री में है कि प्लेसमेंट ईयर्स होते हैं. यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं. ऑफ कोर्स दे वुड प्रोवाइड all the services to get you a job, as I mentioned before, resume, interview. But big companies would come in your university and do kind of interview, something like that, and select you. It's kind of rare thing in UK. आपको सब कुछ अपने पे ही लेना पड़ेगा. आफ्टर ग्रेजुएशन they can just provide you help. The other thing would be like guest, लाइक कौन कौन गेस्ट आ रहे हैं, जो वेबसाइट्स पे मेंशन रहता है पास्ट ईयर में कौन कौन गेस्ट आए थे. एंड द पीपल एलुमिनाई भी आप देख सकते हैं कि जो ग्रेजुएट हो गए वो मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमिनाई बिग फेसेस बन जाते हैं. सो दे काइंड ऑफ प्रमोट ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन सी दैट. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है वो देख सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है फ्री taekwondo, judo, gym, and these and all, like all kind of physical activities, football. This thing is important जो मैंने कंसिडर किया था. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक फॉर बैचलर्स स्पेशली, एंड आई थिंक सो फॉर मास्टर्स ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल, कि जब आप मॉड्यूल्स के थ्रू जाएंगे, what kind of optional subject they are providing, like is it in your favor or is it like random subjects which you are not interested. कि जो भी ऑप्शनल्स होने चाहिए वो सारे ऑप्शनल्स काइंड ऑफ इंटरेस्टेड होने चाहिए. सारे नहीं कहूँगा, एटलीस्ट कुछ होने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज़ 1 or 2 और मैक्स 3. सो वो मॉड्यूल्स मिनिमम 3 or 4 मॉड्यूल्स होने चाहिए आपके जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो. और ऑप्शनल का रेंज भी होना चाहिए काफ़ी. जो ऑप्शनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसका रेंज होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल मॉड्यूल्स अगर जितने ज़्यादा रेंजेबल होंगे आप उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे व्हेन यू आर चूजिंग ऑप्शनल्स. एंड इट विल हेल्प यू टू फाइंड योर इंटरेस्ट, क्योंकि अगर काइंड ऑफ छोटी बाउंड्री रहेगी ऑप्शनल्स में, so you would like choose just anything from there. So this thing is for the students who are applying for student accommodation. Of course, if you are applying for student accommodation, you should see the student life जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कि उनका फीस क्या है, कितना दूर है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एकोमोडेशन दूर होता है यूनिवर्सिटी से, अगर दूर है तो कितना है, एंड इफ़ इट्स नियर इट्स गुड फॉर यू. एंड व्हाट्स द फीस, ऑफ कोर्स द बेसिक थिंग. So and also they provide some extra activity services to like make more interest for the students who are coming from abroad. So सब आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हैं. So क्लास साइजेस देख सकते हैं आप. बेसिक यहाँ पे सिस्टम क्या है क्लास का, कि फर्स्ट इज द लेक्चर, सेमिनार, एंड फॉर सम मॉड्यूल्स वर्कशॉप. सो ऑफकोर्स लेक्चर बड़ा होता है, अच्छा रहता है, लेकिन ऑफकोर्स ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं. सो सम पीपल इवन लाइक मी cannot like of course learn a lot, but they cannot give their own feedback because there are a lot of students in lectures. But in case of seminar you should see the size, क्योंकि अगर उसमें भी बच्चे ज़्यादा हैं, so for the people who speak less, or for the people who like kind of just learn and yeah, cannot speak more in front of more people, so अगर उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी. So precisely आप अपने अपने हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं कि if the quantity mostly most of the universities की 20 to 30 के रेंज में होती है, but if it's more like 50-70, so you should make it a consideration if you are kind of introvert. But of course it would help you if even you are going forward with the same thing. So आपको क्लास साइज और क्लास का सिस्टम थोड़ा देख सकते हैं. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है कुछ यूनिवर्सिटीज़. Like after the modules assessment there are some other assessments which you, that's an optional. If you want to do you can do, if you don't want to do that's fine, it will not affect your like final grades. But they provide these extra services so that you can get some professional certificates from Google, from Amazon, and these are free, most of them.
or if even they are involving some cause, it's quite less for the students. Of course you can see the diversity. अगर आप लंदन आ रहे हैं, आप बाहर इवन आ रहे हैं, अब्रॉड आ रहे हैं, यू शुड सी द डाइवर्सिटी, दैट इज इट गुड इन नंबर्स, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट सिटीजन्स, डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं कि नहीं. यू शुड सी दैट. इट वुड thoroughly impact you throughout the years. वो पता नहीं चलता है, but when you sit around them, when you learn their thoughts, it impacts you and it kind of provide a positive impact in your mind. So you should consider those things. And the last thing you should do, must have a LinkedIn profile before you are applying to the UK universities or even in any abroad universities. And you should connect with the alumni of the university and try to contact and try to like discuss if possible, of course, so that they can give you a proper feedback, because they have studied from those universities and they can exactly give you the feedback which you want, and it would be the real thing. So the last thing I would say is the world ranking. And जो कॉमन सब देखते हैं फर्स्ट स्टेप उनका यही होता है कि क्यूएस रैंकिंग, द रैंकिंग्स, वो सब देखें. सो मैं इसको लास्ट में रखूँगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू सी दैट, you should see that if you are getting a good university in the same price range, you should go for good rankings. But you should first see the factors which I have told you before getting in the university, and before just blindly seeing the university ranking, nothing else. So that's all for this video, and hope this video helps you. And if you have any kind of doubt, you should connect with me on Instagram or LinkedIn. I'll be available over there to answer all your questions regarding student life abroad or anything, work experience, anything, CV. So you can connect with me there, and hope to see you in next video, and hope this video helps you. See you. Bye bye.